हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब टेक्स्टबुक यूट्यूब चैनल। सो आज के इस पर्टिकुलर क्लास में हम देखेंगे 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स फॉर बिगिनर्स। अब ईडियम्स आपका एक टॉपिक है जो बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम्स में पूछते हैं, चाहे वो फिलर के फॉर्म में हो, डायरेक्ट मीनिंग हो, वेयर इट इज करेक्टली यूज्ड, इनकरेक्टली यूज्ड, ठीक है। तो बहुत तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, बट ईडियम का अगर आपको मीनिंग पता हो, जो आपके हिंदी में बोलते हैं मुहावरे, तो आप इजीली वो क्वेश्चंस, आपके आंसर्स मार्क कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। 4 to 5 मार्क्स का आ सकता है आपका ईडियम्स का क्वेश्चन। प्री और मेंस दोनों में ही आजकल पूछने लगे हैं, ठीक है। इवन प्री में जैसे फ्रेज रिप्लेसमेंट के फॉर्म में पूछ लिया। तो पर्टिकुलर जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं बता दूं 50 मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट ईडियम्स फॉर बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम। इंग्लिश सेक्शन जो आपको पता होने ही चाहिए, तो देख लेते हैं ना। हिंदी में आप लोगों ने बहुत बार याद किए हैं मुहावरे। इंग्लिश ईडियम्स क्या हैं, इनके मीनिंग क्या हैं, यूज कैसे होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लास में ही ये 50 ईडियम्स याद हो जाएं। तो लेट अस स्टार्ट। ओके, सबसे पहला, अब मैंने पिक्चर्स आपके लिए स्पेशली यूज करी हैं, क्यों कि आपको थोड़ा सा रिटेन हो। आप जब पढ़ो तो पिक्चर से शायद आप याद कर सको, याद रख सको। ये आई होप यू विल लाइक इट। फॉर ऑल द 50 आई हैव पुट पिक्चर फॉर यू। ओके, तो ये आप देख रहे हो पिक्चर से कुछ समझ में आ रहा है। द बिग पिक्चर, ओके, द बिग पिक्चर ईडियम का मीनिंग क्या हो सकता है? द इंटायर परस्पेक्टिव ऑन अ सिचुएशन और इशू, मतलब हम छोटी छोटी डिटेल ना देखकर उसका जो बड़ा मीनिंग है वो देखें। सो हम बोलते हैं द इंटायर, नजरिया बेसिकली, पर्सपेक्टिव, ठीक है, ऑन एन इशू, ठीक है। तो ओवरऑल बिग पिक्चर मतलब आप ओवरऑल आप ये देखना चाहते हैं कि बिग पिक्चर क्या है, किसी भी सिचुएशन या किसी भी अगर कोई इशू है तो उसकी बिग पिक्चर क्या है, मींस ओवरऑल उसका क्या बोलते हैं, ओवरऑल क्या क्या मिलेगा उससे, राइट। हम बोलते हैं छोटी चीजों का ध्यान मत दो, लुक एट द बिग पिक्चर। ओके, डिटेल्स में ज्यादा नहीं जाना है, लुक एट द बिग पिक्चर। ओके, तो लुक एट द बिग पिक्चर, हाउ इट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग टर्म में बी, ठीक है। तो लुक एट द बिग पिक्चर। समझ में आया कैसे यूज करते हैं? जैसे आप देख रहे हैं सामने कि छोटे छोटे इवेंट से बना के बड़ा इसका क्या आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, लुक एट द बिग पिक्चर, क्रिएट सिचुएशंस दैट वर्क बेस्ट फॉर यू, अगर हम बोलें ऐसा। तो अगर हम यूजेज भी ऐसा बोले सेंटेंस में, ओके, डिटेल्स ना देखते हुए आप ओवरऑल देखिए कि चीज कैसे हेल्प करेगी, ठीक है। हाँ, इन द लॉन्ग टर्म, इन द लॉन्ग रन, या यू नो फॉर मेनी पीपल, तो बिग पिक्चर, ठीक है। सेकंड पे आते हैं, नेक्स्ट, वॉक ऑन एग शेल्स। ये आप देख सकते हो एग शेल्स पे चल रहा है, तो शायद थोड़ा हिंट मिले। देखिए गाइस, इंग्लिश में ईडियम्स में ऐसा नहीं होता कि आपके लिटरल वर्ड के मीनिंग होते हैं। कई बार आप लिटरली इसके मीनिंग गेस नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार टोटली ही अलग मीनिंग होता है। सिर्फ लिटरल मीनिंग नहीं लेते, इसको पूरा को मिला के, वर्ड सेट ऑफ वर्ड्स को मिला के एक मीनिंग निकलता है, उसी के मुहावरे, उसको ईडियम्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका यूजेज क्या है। आप गेस भी कर सकते हो, अगर आप चाहें तो चैट में लिख सकते हैं, गेस कर सकते हैं क्या लग रहा है आपको मीनिंग, बोलिए। वॉक ऑन एग शेल्स, वॉक ऑन एग शेल्स, तो इस ईडियम का मीनिंग है टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस अबाउट वंस वर्ड्स और एक्शंस, ठीक है। तो टू बी, पहले मैं लिख देती हूँ आपको, फिर हम यूजेज भी देख लेंगे कैसे यूज होता है। टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस अबाउट वंस वर्ड्स और एक्शंस, मतलब बहुत ही सावधानी से कोई स्टेप लेना है, ठीक है। जो बोल रहे हैं उसके लिए भी आपको कॉशियस रहना है, ठीक है। तो व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन एक्शेल्स, यू ट्राई टू टेक केयर कि आप बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, ध्यान दे, केयरफुल रहें कि आप क्या करते हैं और या क्या बोल देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ओके, कई बार होता है ना, कुछ लोगों के साथ हम जाते हैं तो मतलब वो बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, उनको बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा मजाक कर देंगे बुरा लग जाएगा। तो जैसे हम बोलते हैं यू हैव टू बी केयरफुल, यू विल हैव टू वॉक ऑन एक्शेल्स इफ यू आर गोइंग आउट विद हिम। तो कोई बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाता है, बुरा मान जाता है, तो आपको बहुत सावधानी से, हाँ, सोच समझ के बोलना है उसके सामने, राइट। तो उस तरीके से हम
ये आप पर्सन से भी रिलेट कर सकते हो अगर ऐसा कोई है, वॉक ऑन एक्शेल्स यूज करते हैं। चलिए गाइस, सबसे इजी वाला, ये आप जल्दी से चैट में बताइए क्या हो सकता है। पुल समवंस लेग्स, सबसे इजी वाला है पुल समवंस लेग्स। ये हम कब करते हैं, ये आपको समझ में भी आ रहा है। पुल समवंस लेग मतलब डिसीव समवन प्लेफुली, बेसिकली मजाक उड़ाना, टीज करना, फूल अराउंड करना, ठीक है। तो ये नॉर्मल यूज होता है जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, उसको टीज करते हैं, फ्रेंडली वे में भी बोल सकते हो, टीज समवन और मेक फन ऑफ समवन। ओके, मेक फन ऑफ समवन। तो कई बार आप किसी पे जोक बोल देते हैं, फिर आप बोलते हैं डोंट गेट अपसेट, हाँ, डोंट टेक इट टू योर हार्ट, आई वाज जस्ट पुलिंग योर लेग, ओके, आई वाज जस्ट पुलिंग योर लेग। तो टीज करना, मॉक करना, मजाक उड़ाना, फन वे में भी हो सकता है, हाँ। एलिफेंट इन द रूम, ये बहुत प्यारी लगी मुझे पिक्चर, अगर आप देखें तो मीनिंग भी काफी, और ये बहुत कॉमन यूज होता है, ये भी मैं बताना चाहूंगी इडियम विच इज वेरी कॉमनली यूज। अब यहाँ पे हम मीनिंग समझेंगे, एलिफेंट इन द रूम, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, इस इडियम का मीनिंग क्या है, अ मेजर और कंट्रोवर्शियल इशू विच इज ऑब्वियसली प्रेजेंट बट इज अवॉइडेड एज अ सब्जेक्ट फॉर डिस्कशन। सो ये आप देख सकते हो, इन द रूम मतलब बहुत ऑब्वियस इशू है, अ मेजर obvious controversial issue which is present but avoided, okay, हाँ, avoided means it is not discussed, so there is some problem if you are sitting around a group of people in the room, you know there's some problem, right? But people are avoiding, they are not discussing that controversial issue, right? They are trying to avoid it. So it is obvious controversial issue which is present but you know avoided, people don't want to talk about it, don't want to discuss about it, that you call elephant in the room, right? तो अब इसके हम एग्जाम्पल्स भी समझ सकते हैं, जैसे कि डेट बर्डन है, जो इशू इग्नोर किया जा रहा है, नहीं उस पर बात की जा रही है, कोई डिफ़िकल्ट या अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस है जो आपको नहीं डिस्कस करने, तो वो होता है एलिफेंट इन द रूम, राइट। हाँ, आई डोंट वांट टू आस्क द क्वेश्चन, इट इज़ अ बिग एलिफेंट इन द रूम, मतलब एक ऑब्वियस प्रॉब्लम है बट आई डोंट वांट टू डिस्कस इट, ओके, राइट। तो ये होता है कि आप एक ऑब्वियस प्रॉब्लम है बट यू डोंट वांट टू डिस्कस इट, यू डोंट वांट टू ओपन दैट टॉपिक, क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल है, अब उससे हो सकता है फाइट हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, नेगेटिविटी आ जाए, तो वो यू अवॉइड डिस्कसिंग इट। अंडर द वेदर, again from the picture I think it is very clear, probably you have heard it, if you can tell me what is the meaning under the weather. Okay, I'll write the meaning here. Under the weather idiom means you feel ill, you are not well, okay, instead of saying not well, I am not well, आप बोल सकते हैं I am under the weather। तो idioms क्यों यूज करते हैं, लैंग्वेज को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम नॉट फीलिंग वेल, आप डायरेक्ट बोले कि आई एम अंडर द वेदर, ठीक है, आई एम अनवेल, ठीक है, आई एम अनवेल, इसके जगह पे आप बोलो आई एम अंडर द वेदर, तबीयत जब ठीक नहीं हो, ओके। ये भी बहुत ही अमेजिंग सी पिक्चर है, अगर आप देखें, अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, क्या होगा इसका मीनिंग, someone who hides malicious intent under the guise of kindliness, someone who hides malicious intent under the guise of kindliness. So now you can say malicious means evil, okay, so here there is a wolf in sheep's clothing means the clothing is to cheat, to deceive, to trick, तो धोखा देने के लिए है क्लोथिंग, शीप की क्लोथिंग है बट अंदर क्या है, वुल्फ है, तो वुल्फ का कैरेक्टर यूजुअली रिलेटेड होता है ईविल से या बैड से या मैल इंटेंशन या मैलिशियस इंटेंट बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो टू चीट यू, या फिर अब काइंड बन के आपको चीट करने की कोशिश करते, काइंड कौन यहाँ पे बोला है, शीप, ठीक है, वुल्फ कौन, क्लेवर, तो डोंट ट्रस्ट द सेल्स पीपल एट द स्टोर, दे आर वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, अगर ऐसा बोला, डोंट ट्रस्ट द सेल्स पीपल एट द स्टोर
मीन्स कि वो लोग वुल्व्स हैं इन शीप्स क्लोथिंग, मीन्स दिल ट्राई टू मेक अ फूल ऑफ यू, दिल ट्राई टू एक्ट काइंड बनने की कोशिश करेंगे, बहुत प्लेजेंट और फ्रेंडली होंगे आपके साथ, अपेयरेंसेस उन पे नहीं जाना, बट वो हाइड करेंगे फैक्ट कि वो बहुत इविल है, ठीक है। सो जो प्रिटेंड करते हैं कि दे आर देयर टू हेल्प यू, वेरी काइंड पीपल, बट अंदर थोड़ा उनका इंटेंशन जो होता है इविल होता है, बैड होता है, तो दैट इज हाउ वी यूज दिस। नेक्स्ट, हु इज समबडी वी कॉल वेट बिहाइंड द ईयर्स, बताइए। Who is someone we can say for a person who is wet behind the ears. तो wet behind the ears का मीनिंग है somebody who lacks experience, वो बिगिनर है, ठीक है। someone who lacks experience, who is a novice, ओके, नॉट मच एक्सपीरियंस, एक बिगिनर है, टाइरो है, नोविस है, नया नया कोई चीज सीख रहे हैं, तो उसके लिए बोलते हैं वेट बिहाइंड द ईयर्स, हु इज अ बिगिनर, राइट, हु इज अ बिगिनर, राइट, मतलब यंग है, बिगिनर है, इमेच्योर है, उसको ज्यादा अभी एक्सपीरियंस या समझ किसी पर्सन को अगर नहीं है तो हम बोलते हैं वेट बिहाइंड द ईयर्स, ही इज अ नाइस यंग पर्सन बट अ पर्सन हु इज वेट बिहाइंड द ईयर्स। ओके, नेक्स्ट, अगेन कॉमन यूजेज ही है इसका, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। नाउ आउट ऑफ द बैग मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, रिवील अ सीक्रेट, यूजली बाय मिस्टेक अगर आपसे कोई चीज सीक्रेट रिवील हो जाए, रिवील अ सीक्रेट, बाय मिस्टेक अगर आप किसी को सीक्रेट बता दे, यूजली मिस्टेकनली, बाय एक्सीडेंट, राइट, देन वी से let the cat out of the bag, right? So do not let the cat out of the bag about my promotion, do not reveal this secret, okay? तो बाय मिस्टेक अगर आपने किसी का सीक्रेट बोल दिया, रिवील कर दिया, बता दिया, ओके, हाँ, तो उसी को बोलेंगे लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ओके, नेक्स्ट वन इज beat a dead horse. Now very clear, very clear from the picture, okay? To keep talking about a subject that has already been discussed or decided. Keep talking about the subject already discussed. Now पहले ही किसी चीज के बारे में बात हो चुकी है, उसको आप दोबारा डिस्कस करते हैं, रिपीट करते रहते हैं, सो यू आर एक्चुअली बीटिंग अ डेड हॉर्स, ओके। पहले ही डिसाइड हो गया है, डिसीजन ले लिया गया है, ओके, यू ट्राई टू वेस्ट टाइम, यू डिस्कस द सेम थिंग अगेन, सेम सब्जेक्ट अगेन एंड अगेन, ओके, हाँ, तो यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हेन डू यू से बीट अ डेड हॉर्स, ओके, यू ट्राई टू रिपीट थिंग्स, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा, देर इज नो यूज ट्राइंग टू कीप दिस बिजनेस गोइंग, ओके, वी आर बीटिंग अ डेड हॉर्स, हम वही चीज दोबारा दोबारा कर रहे हैं, ओके, हमें पहले ही समझ में आ गया, बट हम अपना टाइम और एफर्ट वेस्ट कर रहे हैं कोई ऐसी चीज करने में जो इम्पॉसिबल है, हम वही सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी, जिसका हमने डिसीजन ले लिया है, राइट, तो यू आर बीटिंग अ डेड हॉर्स। चलिए नेक्स्ट, बाइट द बुलेट, सुना होगा शायद, what do you mean by bite the bullet? Bite the bullet idiom meaning decide to do something difficult or unpleasant, okay? पहले आप बहुत ज्यादा hesitate कर रहे थे किसी चीज को करने के लिए, but then you decide to do it, decide to do something difficult or unpleasant, ठीक है। तो कोई टफ चीज करना आप करने के लिए डिसाइड करते हैं जो डिफिकल्ट है, यू बाइट द बुलेट। पहले आप थोड़ा सा ना हो रहे थे, हेसिटेट कर रहे थे कि नहीं, ठीक है, एज अ डायरेक्टर यू विल हैव टू टेक द डिसीजन, यू विल हैव टू बाइट द बुलेट, ठीक है, ऐसा, सॉरी, हाँ, यू हैव टू बाइट द बुलेट मतलब यू हैव टू force yourself to do something even if it is difficult, you have to be brave in a difficult situation. Like for example, I hate going to the dentist, right, but I will have to bite the bullet because it is required, it is urgent that I go to the dentist. So bite the bullet means now something I will have to do, right,
I can't relent, I will have to go and I have to do something unpleasant, bite the bullet. चलिए, cut the mustard, क्या होगा ये? What do you mean by cut the mustard? Cut the mustard idiom meaning come up to expectations, reach the required standard. ठीक है, expectations fulfill करना, come up to expectations. Reach the required standard. ठीक है, ये होगा आपका कट द मस्टर्ड. तो कोई एक्सपेक्टेशंस थी आपकी, कोई स्टैंडर्ड सेट थे, वो आपने फुलफिल किए, तो दैट इज कट द मस्टर्ड. क्लियर गाइज? एग्जाम्पल्स लिखते जाइए आप. ओके, हाँ. फॉर एग्जाम्पल, ही डिड नॉट कट द मस्टर्ड एज अ हॉकी प्लेयर. He did not reach the required standard. Okay, required desired performance. He failed in prelims exam. He did not cut the mustard, right? Okay, he failed. He did not cut the mustard means failed. Cut the mustard means he reached the required standard. The performance was good. He surpassed the desired performance. Okay, here's something straight from horse's mouth. When do you use it? Here's something straight from the horse's mouth, meaning you hear it from the person who has direct personal knowledge of that subject. Hear from someone who has direct personal knowledge about the subject. Now guys, please understand. For example, just if I am telling you that, for your IBPS exams, banking exams, prepare like these kind of questions are important, right? On the other hand, if there's somebody who comes, who prepares, who sets IBPS exam paper, will tell you, okay, these question types are important. So you are hearing from the horse's mouth means from somebody who is actually involved in that thing, right? Who has direct knowledge about it. So when you go to seminars, you listen to people who are experienced, who have served as, say, for example, if you go to any banking person, right, professional, okay, and listen to his seminar, means you are listening to an experience from a person who has, good knowledge about it, who has himself experienced something, and he's telling you direct. So direct from the source, if you get, you say hear from the horse's mouth. Clear? This is how you use the idiom. I hope the picture is bright and clear. Yes, now it's like better. Okay, next one. We'll go to the next one. Rain check. Very, very commonly used. Again, extremely common idiom. Very, very commonly used. Rain check means now you were offered or requested, you have offered postponement of an invitation until a more convenient time. Okay. So suppose somebody invites you maybe for dinner and you are busy at that time, and you say rain check means probably we'll postpone this, sometime else I'll come to you for dinner, I'm busy. Okay. So when you want to tell someone that you can't accept their invitation for that particular time, specified time, okay, then you say rain checks. Tell someone that you cannot accept an invitation okay, but would like to do it at a later time. Means, like I gave you the example, right? You're busy today, you can't go for dinner. Okay, you are invited but you can't go, but you say rain check means we'll discuss and we'll decide a different time for it because I'm busy currently. Polite way of saying this. Now I think in the series that was there, web series Friends, this was a very commonly used phrase, rain check. Okay, I would take a rain check. Okay, the easiest one, I think this is like your school idiom only, very common for beginners. Early bird gets the worm. I think probably catches the worm. You say
gets the worm. Okay, someone will have an advantage if they do something immediately or before the other people do it. So you get an advantage if you do a thing before others. Means you have to be on time. Early bird means what? You do something before others do it. You get that advantage, right? So early bird will get the worm means if you wake up early, probably you will get the benefit. Okay, you will get. Now everything comes to those who wait is wrong. Here you say, you know, if I do things early better than the others, like earlier than the others, okay, I will get, for example, in a queue, if you are there, you have to go and you have to buy a ticket, you have to be in a queue. Now if you go early, probably you will get the ticket first, so you will get the result, you will get the output first. Okay, it is not rocket science. When do you use this? It is not rocket science means it is easy to understand, it is easy to do something you're trying to say. It is not rocket science. If I say getting full marks in reading comprehension is not rocket science, you can easily get it. Okay, you can easily get it with okay, if you know how to, you can easily do it. It is not too tough. So when we have to say that something is not very tough, it is easy to understand, not difficult to understand, okay, then we say it is not rocket science, because rocket science is something which is very hard, right? Okay, that is how we say it is easy. Okay, next, hold your horses means be patient, have patience, don't be in a hurry, don't be in too much hurry, hold your horses, right? So I think in classes also I use this idiom a lot, probably. Okay, stop and consider your decision carefully, or your opinion. Okay, right, think about it, don't be in a hurry to conclude. Okay, think about it. So like some people will say, I want to quit now, I want to quit this job. So no, you have to hold your horses, wait, you have to consider your opinion, you have to consider, you have to think about it, then take a decision. So hold your horses means have patience. Okay, dhairya rakhna, have patience. Okay, next, couch potato, a very lazy person. You can see here is a couch potato. So somebody who is very lazy. Okay, now you can see eating potatoes, sitting in front of the TV on the couch. Okay, so couch potato means who will spend a lot of time sitting watching television, not doing any work, lazy person. Okay, जो आराम से बैठ के couch पे अपने TV देखता रहता है, very lazy person. Next, hog the limelight. This is a very cute photo. When we say hog the limelight, what does it mean? Draw the focus of attention to yourself. Okay, so try to take all the attention, draw attention to yourself, even at the cost of others. तो आप चाहते हैं कि पूरी attention आप पे हो, चाहे वो कैसे भी हो. Draw the attention to yourself so that people hear you, listen you, see you always. You try to steal the limelight, you try to hog the limelight. Okay, दोनों बोल सकते हैं, steal the limelight. Okay, तो for example, if the princess steps out, okay, obviously she is going to hog the limelight, all the attention will go there. Okay, right? So for example, somebody is a very private person, they don't want to hog the limelight, they don't want all the paparazzi, all the focus, right? So when you want to hog the limelight means you want to draw attention to yourself. Okay, फैक्ट चांस, यहाँ पे बहुत सारे लोग, दिस इज एक्चुअली मिसअंडरस्टूड अ लॉट, दिस पर्टिकुलर idiom. So if there is a fat chance of something means there is big possibility or zero possibility. What do you say? Fat chance means very little possibility, close to zero, very little or no possibility, very little or no possibility, zero. For example, you see this comic. Okay, now this means I won't have to listen to any other political ads, right? Fat chance means you will have to listen, there is no chance that you will not have to listen. Fat chance means
very little possibility. Okay, now if you come and ask me, ma'am, is there any time that RC will not be there in your paper, I will say fat chance. Every time in English section RC is there, so zero possibility. Okay, fat chance means zero possibility. Next, a perfect storm. Perfect storm meaning extremely bad situation. Okay, now a lot of bad situations, circumstances happen at the same time. That is a perfect storm. Okay, extremely bad situations that happen at the same time, right? So perfect storm, like too many negative things, situations, events that happen at the same time, it is like a storm back to back, right? Bad events happening, perfect storm. Two peas in a pod, this is a very cute picture actually. When do you refer to two people together, you see, and you say, they are like two peas in a pod? When do you say that? Now, like two best friends, two peas in a pod, meaning they are very similar, okay, to each other. Okay, the two best friends are two peas, like two peas in a pod, means they are very similar to each other in character, in liking, very similar to, personalities are similar, very similar to each other. दोनों एक जैसे हैं, जैसे बोलते हैं तो एक जैसे हैं, तो in character, in personality, the two best friends are like two peas in a pod, always together, like same character, same type. Okay, next is storm in a teacup. When do we use this? Storm in a teacup. It means when about a very small thing, okay, you are making a big issue, okay, right? Great excitement about unimportant thing, great outrage, or excitement about an unimportant thing. Okay, so small, which is not even important, something very trivial, unimportant, you like make a huge cry, like your neighborhood auntie. Okay, she might, if you park your car outside her house, she'll make huge cry. It's not too, like for 2 seconds you park your car outside her house and she makes, starts yelling and crying and shouting at you. And so like for a small issue, small thing, they make a big issue. Okay, storm in a teacup. Okay, next, snail space. Now this one I think majority would know. Okay, a snail pace is definitely not fast. It is slow speed, extremely slowly. The construction work is going at a snail's space. Snail's pace means extremely slowly. The construction work is going extremely slowly. Okay, snail's pace. Next is bull in a china shop. When do you use this? Who is a bull in a china shop? A person who breaks things or who often makes mistakes, causes damage. Okay, right? So, who is very clumsy actually, who breaks things, causes damage. He'll go somewhere, if you'll give him one task, he'll, spoil 10 things. So, very clumsy person who will break things, who will cause a lot of damage, right? And or something where you need careful behavior, and he will not act like that. Okay, so the politician gave a very rough speech. He was like a bull in a china shop. He had to say sorry to the public. Okay, bull in a china shop, you're not able to handle the situation carefully, okay, and you deal roughly with it, badly with the situation, then you are acting like a bull in a china shop. Now the easiest one, guys, apple of my eye means somebody who's very, very extremely person you are extremely fond of. A person you are
extremely fond of. Okay, you like that person very much, you're proud of that person. My pet is the apple of my eye. So this is your, one you like, when you are very fond of. Okay, very important one. Next, when do you burn the candle at both ends? Burn the candle at both ends, meaning go to bed late and also get up early. You're doing both actually. Go to bed late and also get up early. Right? So during exam times, I burn the candle at both ends. I'm also like, I'm studying and studying and studying and going to bed late. Also, I'm waking up early to study. So when you're burning the candle at both ends, you are actually sleeping late and then also getting up early. Okay, working for long hours, burning the candle at both ends. Next, when do you say living on the edge? Living on the edge meaning where you are constantly taking risk. Okay, you are living in a potentially risky environment, or you are constantly taking risk. You are where the situation is very unpredictable. You're living, see the house, where is the house here? Okay, living on the edge, it can fall anytime. So you are actually in an environment where there's a lot of unpredictability. kabhi bhi kuch bhi ho sakta hai वैसा. So living on the edge meaning in a situation where there's a lot of unpredictability, also dangerous situation. Okay, and unexpected, you never know what will happen. You are taking a risk which is beyond most people. Okay, so you are living on the edge. Next, from the, I think just after reading it is clear. Button your lips means stop or refrain from talking. Don't say anything. Refrain, I think from the picture also it is clear. Refrain from talking. So when we say do not say anything, stop talking, refrain from talking, you say button your lips. Okay. There are times when it is best to keep quiet. Okay, right? But even when you want to say somebody shut up, okay, don't say shut up. You want to say shut up, you can say just button your lips, don't say anything. Right? Sitting on the fence. Now this person, actually she is like actually enjoying sitting on the fence. But what does this particular idiom mean? Sitting on the fence means you remain neutral. Okay, you are not able to, actually you are confused, you are not able to decide, you are undecided. Okay, so you don't know which side, this is the fence, this is the boundary, so which side to go, this side, that side. Now you are confused, or you can also say, actually we say undecided, कि आप decision नहीं ले पा रहे. ठीक है, एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो अवॉइड करते हैं डिसीजन लेना. यू आर सिटिंग ऑन द फेंस, न्यूट्रल होके बैठे हैं, फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे वो. ओके, नेक्स्ट, sitting duck. When do you use this idiom? Sitting duck idiom meaning an easy target. Okay, हाँ, तो कोई भी अगर easy एक target है, okay, और easy victim बन सकता है, that is a sitting duck. A person, someone or something that is very easy for an enemy to attack, for an enemy to shoot. ठीक है, तो an easy टारगेट, किसी भी काम में जिसको सबसे पहले इजीली हार्म किया जा सके, ही और शी इज अ सिटिंग डक. इजी टू अटैक, इजी टू हार्म, इन इजी टारगेट. ओके, नेक्स्ट इज अगेन थ्रू द रूफ. नेक्स्ट वन, through the roof idiom meaning to become very angry, to become very upset. Become very upset or angry. Actually this is a literal drawing, yes, but to be very upset, to be very sad about something, or to be in anger about something. When they realized he had lied to them, his parents went through the roof, means his parents went through the roof means his parents got really angry. When they got to know he lied, जब उन्हें पता चला कि उसने झूठ बोला, they parents went through the roof means they got very angry. Okay, now have one foot in the grave. Next one is have one foot in the grave.
meaning idiom to be close to dying because of old age, illness. When you talk about that somebody is very old or nearing death, then we say that person to be very old or nearing death. Then we say that he's about to die, he's like very old. We say, he actually has one foot in the grave, he's a very old person, or maybe because of illness he's nearing death. Okay. Break the ice, very commonly used, guys, even in conversations, extremely common idiom. What is this? Break the ice. When do you use this? When you start a conversation, okay, and to say something that makes people feel more relaxed. Okay. Now, break the ice means you make people you have not met before a bit relaxed. You try to go to them. Suppose you are at a party, you don't know anybody, and you start talking. You approach somebody, you start talking to them. Building uh, atmosphere which is relaxed. You start a conversation. आप किसी से बात करना शुरू करते हैं पहली बार मीटिंग में या कहीं पार्टी में, तो यू आर ब्रेकिंग द आइस मीन्स you are making the person more relaxed. Okay, try to gain understanding. Next, caught red-handed. Now this is also a very cute picture. If you see, I hope these pictures also help you remember the meanings. Caught red-handed means to catch a person in the act of doing something wrong. Caught doing something wrong. You were stealing and you were caught stealing. So you have caught a person red-handed. ठीक है, तो किसी को पकड़ना कुछ गलत करते हुए, इलीगल करते हुए, वैसा. वेट ब्लैंकेट, ये किसको बोलते हैं, कौन से पर्सन को बोलते हैं वेट ब्लैंकेट? नाउ सपोज गाइज अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स डिसाइड टू गो ऑन अ ट्रिप, 5 best friends, college friends, but one friend is saying I probably at the last moment cancels. Then he is a person who spoils other people's fun. Okay, so a person who spoils other people's fun is a wet blanket, right? By basically disapproving their activities, not joining, disapproving, not joining in their activities. Okay, then you can say is a wet blanket. Like I gave you the example, right? A group of friends, 6 friends decided that they'll go on a trip. They planned everything, they booked the tickets, but at the last minute this particular friend, he backed out. He said I will not be a part of it, or initially, or he said that I'm busy, I will not come. So wet blanket, who spoils others' funds also. Okay, very important one. Now in editorials you will basically find this idiom a lot. Snowball effect, as you can see from the picture here, something which is small and gets bigger and bigger and bigger. Okay, it has a snowball effect. When do you say something has a snowball effect? Idiom meaning situation in which one action or event causes many other similar actions or events, right? So it starts, now the problem starts here, it's small, but it gets bigger and bigger and bigger. See, bam, it burst, right? So this is how, okay, a situation in which one action causes many other similar events or actions. Similar actions or events. So one thing goes wrong, and as with it there are many other things which might go wrong. So snowball effect. Also situation in which something increases, like at a very faster rate, it gets bigger. Okay, it gets bigger or increases in size at a very fast rate. That is the snowball effect. Okay. Now for example, if we say so there were some people who got angry because of a new law. They started talking about it, because of which the situation got worse and they were people started protesting. So there was a snowball effect. ठीक है, तो किसी ने कोई चीज स्टार्ट की और उससे वो और इंटेंस और बड़ी होती गई, देयर इज अ स्नोबॉल इफेक्ट.
Next, again, excellent picture, I will say. So, but the obviously the meaning is very different. Wreak havoc means when you cause great damage. This is still cute, but yeah, destruction. When you talk about destruction, when you talk about damage, okay, the earthquake wreaked havoc. Okay, in people's life, the earthquake wreaked havoc means it caused huge damage, complete like destruction. Okay, this is still a very cute picture for it. Okay, so I gave you the example of earthquake. Next is 40 winks. Now what is 40 winks? 40 winks means nap. Okay, a short sleep, especially during the day. Short sleep, maybe especially during the day. Especially you say na afternoon sleep. For some time, half an hour, 1 hour you sleep. 40 winks, short sleep, a nap. Okay. See eye to eye with someone means to agree with someone. What somebody is saying, to agree. Okay. तो किसी से सहमति होना, किसी की बात से I see eye to eye with you. I see eye to eye on this issue. I see eye to eye means I agree with you. ठीक है, मैं सहमत हूँ इस बात से. Agreement. Knee jerk reaction. So, spontaneous, immediate reaction, okay, without giving any thought. मतलब आप immediately किसी चीज पे अगर react कर दे बिना सोचे बिना समझे तो that is a knee jerk reaction, right? So one must avoid knee jerk reaction or spontaneous you can say reaction. Knee jerk is automatic, right? Very predictable way. Without thinking, you just say, right? Without thinking, you just reply. So very predictable, very spontaneous, without even giving a thought, without thinking. So knee jerk reaction. Okay, next. Blue color now is related. Now in idioms, you see colors also which are related. Now here we have the blue. When you say have the blues, what does it mean? It means you feel, as you can see from the picture, depressed or sad. The color blue is actually related to this emotion which is gloomy, sad. Feel have the blues means feeling depressed, I feel sad, right? Hang in there. When do you use this phrase? When do you tell someone to hang in there? Suppose somebody is about to give up and you want to encourage that person, right? So when you give encouragement, you encourage someone to keep trying, not give up. Okay, encourage someone to keep trying to do something even if it is difficult. Don't give up, give it one more chance. You try to encourage, so you say hang in there. Your time will come, hang in there, you will get the results, you will get the positive result, hang in there. Okay, something which is available for use, we say up for grabs. Ye simple meaning hai guys iska. Up for grabs means okay, you can have the sandwiches, it is up for grabs means available for use. Anything which is available for use, we say up for grabs. Okay, now again, this also I think is used a lot in your articles. Okay, last straw, last in the series of bad things, last in the series of bad things that make someone very angry. As you can see in the picture, make someone very upset or angry. So back to back you are facing some problem, some difficult situation. Okay, now this is the last one. Now you're like first negative thing happened. Okay, maybe your car broke down, you're like okay, I'll get it repaired, it's okay कि हो गया बुरा एक चीज. Second thing, wallet stolen. अभी वॉलेट भी चोरी हो गया. थर्ड थिंग, फेल्ड इन द एग्जाम. तो नाउ थर्ड थिंग हैपन, दिस इज द लास्ट. नाउ यू कांट टेक इट एनी मोर. बैक टू बैक सीरीज में लास्ट. नाउ यू गेट वेरी अपसेट और यू गेट वेरी एंग्री व्हाई दिस इज हैपनिंग. तो जो बैक टू बैक नेगेटिव इवेंट्स हो रही है इसमें लास्ट, जब आप क्या बोलते हो लास्ट की, अब हम और एक्सेप्ट नहीं कर सकते. आई एम वेरी अपसेट नाउ. ओके, सो फार सो गुड. ये आपका कैजुअल ऐसे यूज होता है इडियम. ओके, पॉजिटिव इडियम. सो फार सो गुड मीन्स टिल नाउ एवरीथिंग इज going well.
okay, without problems. So something has proceeded well without issues, okay, something is going okay, going well, so far so good, अभी तक सब अच्छा जा रहा है, तो we say so far so good. For example, how is your new business doing, right? How is it going? How is your new business going? So far so good, अभी तक तो सब अच्छा है, right? Going well. Okay, when you call it a day, when do you use it? Now in normal conversation we say I call it a day, means I've worked very hard. Now for the day you decide to stop working or stop doing something. So you have been working full day, now you say okay, now I call it a day, after this I am not working anymore, आज के लिए इतना काफी. Call it a day means okay, I'm done now, no more, okay, call it a day, right? Now time to quit, now I will relax, now time to quit, call it a day, I'm not giving more time or effort to this thing now. Okay, very important. Now this picture is एप्ट, एकदम एप्रोप्रिएट पिक्चर है. ये देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे मेंटेनेंस कैसे की जा रही है, टेप लगा के. तो कट कॉर्नर्स, व्हेन डू दे, when does someone cut corners? Cut corners means you try to save cost, okay, हाँ, you try to save time or cost or money, but guys you should not do it, because now if you are saying you cut labor, you cut time, but this can be very dangerous. Means for example, if a factory worker does not install a fire extinguisher and someday there's some fire, so he tried to cut corners, he tried to avoid that work, he said like let's save time and cost and money and not install the fire extinguisher, but when there's fire it will be huge loss. So ये कुछ होता है कि कुछ डिटेल्स पे ध्यान नहीं देना, तो रिजल्ट शायद उतना अच्छा ना हो. आप पैसे बचाने के लिए या टाइम बचाने के लिए कोई चीज़ें नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, और उसका रिजल्ट जो है अनफेवरेबल, मोस्टली लीडिंग टू समथिंग नॉट फेवरेबल और अनफेवरेबल. ठीक है, द फैक्ट्री एग्जाम्पल दैट आई गेव यू गाइस, सिंपल, कट कॉर्नर्स. Face the music, when you have to face the music, you do something wrong, now you will have to face the result or consequences. अब आपने कुछ गलती करी, उसका आपको भुगतना भी पड़ेगा consequence. तो face the music means face the consequences. When do you say not my cup of tea? Means something not of interest. Maths is not my cup of tea, नहीं समझ में आती मुझे, something not of my interest. Okay, so not my cup of tea. Not my cup of tea means नहीं पसंद या नहीं समझ में आती. Like for example, इसमें लिखा है hiking up steep hills for hours is not my cup of tea. I would not like to do it. Not something that interests me. जिसमें interest नहीं है. Okay. Again, the picture is like funny. Wrap your head around something. Important one. When do you say this? Wrap your head around something means you try to understand the meaning. Try to understand something. Okay, think about it. Okay, try to understand something. थोड़ा सा ऑर्डिनरी से अगर कुछ चीज़ अलग है, यू नो ट्राइंग टू थिंक अबाउट इट एंड trying to wrap your around means you're trying to accept it, trying a way to find a way to understand it. नहीं है कोई चीज़, नॉर्मल नहीं है, रेगुलर नहीं है, तो you are wrapping your head around something. Now we have covered 50 idioms guys, और इन्हीं idioms से हम बहुत सारे questions भी करते हैं अपने classes में. So for that join the foundation batch. ठीक है, कोड है हर्षिता HARSHITA for maximum discount on Testbook. तो फाउंडेशन बैच में idioms से रिलेटेड भी क्लासेस होंगी, क्वेश्चंस होंगे. यू शुड डू इट बिकॉज अभी वेटेज बढ़ गया idioms का, और ये हमने अभी कॉमन वाले idioms देखे हैं इस क्लास में. सो डू रिवाइज. आई होप दीज वर यूजफुल. डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड लर्न दीज, राइट. ऑल्सो फॉर द PDF ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप हर्षिता मैम टेक्स्टबुक. यहाँ पे मैं आपको इसकी PDF भी दे दूंगी फॉर रिविजन. नाउ दिस इज फॉर बिगिनर्स, हम आगे भी और इसमें ऐड करेंगे, बट फर्स्ट व्हेन यू आर स्टार्टिंग यू शुड नो दीज, राइट. थैंक यू गाइज, थैंक यू.